Welcome to Sushmita's science class. Here, science will be made very interesting and easy. Now we are going to study about ears, one of the very important sense organs that help us to hear. A pair of ears are present on each side of the head. It has three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. This outer ear consists of the visible part, that is the pinna, which collects the sound waves and passes on to the ear canal. So outer ear consists of pinna, the external ear, and the external ear canal or the auditory canal. Outer ear collects the sound waves and guide them to the tympanic membrane. This is the tympanic membrane. It is called the eardrum. तो जो भी बाहर के साउंड होते हैं वो ये पिन्ना, हमारा कान जो बाहर से दिखता है उसको पिन्ना कहते हैं, वो इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं एंड ये जो ईयर कैनाल है इससे साउंड वेव्स को यहाँ तक पहुँचाता है. ये है ईयर ड्रम, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं. और ये जो ईयर ड्रम है ये आउटर ईयर जो कि यहाँ से यहाँ तक है और मिडिल ईयर को सेपरेट करते हैं. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम है, यहाँ से साउंड वेव्स आके ईयर कैनाल के बीच में से, आउटर ऑडिटरी कैनाल के बीच में से इसको स्ट्राइक करते हैं. द मिडिल ईयर is a narrow air-filled cavity in the temporal bone. It has chain of 3 bones here, that is malleus or the hammer. See, this is the malleus or the hammer. जैसे ही साउंड वेव्स यहाँ से इसको टकराता है ये वाइब्रेट करता है, इससे ये हैमर जो है ये एनविल को स्ट्राइक करता है. एनविल से ये वेव्स स्टेरअप को स्ट्राइक करके इनर ईयर की तरह पास हो जाता है. द मिडिल ईयर हैज़ चेन ऑफ 3 बोन्स, द मैलियस, द एनविल or the incus, and the stapes or the stirrup, and this stirrup is the smallest bone in the human body. The middle ear lies within the temporal bone and extends from the tympanic membrane, that is the eardrum, to the lateral wall of the inner ear. Here, the lateral wall of the inner ear. The main function is to transmit vibrations from tympanic membrane to the inner ear via the auditory ossicles. Auditory ossicles किसे कहते हैं? Auditory ossicles are these 3 bones. Auditory ossicles are a chain of small bones in the middle ear that transmits sound from the outer ear to the inner ear through mechanical vibrations. Now, the inner ear, this is the inner ear, it has cochlea. It transforms sound waves into nerve signals
which is sent to the brain through this auditory nerve. This is the eardrum or the tympanic membrane. It separates the outer ear from the middle ear. Outer ear यहाँ से यहाँ तक, ये tympanic membrane और the eardrum, और ये है middle ear. This is a thin membrane-like structure that vibrates on receiving the sound. These vibrations are passed to the middle ear, and then in the middle ear there are chain of small bones that transmit sound from the outer ear to the inner ear, outer ear to the inner ear, through the mechanical vibrations. Inner ear has the cochlea. It transforms the sound into nerve signals which is sent to the brain. ये साउंड वेव्स यहाँ से अंदर आता है, इसको टकराता है, इसमें वाइब्रेशन होता है, तो ये हैमर जो है वो इसमें बीट करता है. ये जो 3 बोन्स हैं इनको ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं. ये मिडल ईयर में आता है. ये वाइब्रेट करके कॉक्लिया तक मैसेज पहुंचाता है, मतलब साउंड वेव्स को यहाँ तक पहुंचा देता है. और यहाँ जो साउंड वेव्स है वो नर्व सिग्नल्स में बदल जाते हैं और ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू वो ब्रेन पे पहुंच जाते हैं. द इनर एयर इज़ अ होम टू कॉक्लिया and the main parts of the vestibular system. अब ये vestibular system क्या है? The vestibular system is one of the sensory systems that provide our brain with the information about balance, motion, and the location of our head and body in relation to our environment. Vestibular system is a sensory system that is essential for normal movement and equilibrium. The vestibular system in the inner ear is a balance mechanism. It works with the visual system, that is the eyes and the muscles, and part of the brain that work together to let us see. To stop objects blurring when the head moves. It also helps maintain awareness of positioning when walking, running or riding a vehicle. हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं या व्हीकल में चढ़ते हैं, कोई भी मोशन जब हम करते हैं, हर एक मूवमेंट के लिए हमें इक्विलिब्रियम की ज़रूरत है, यानी हमें बैलेंस मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है वेस्टिबुलर सिस्टम. If you found the video useful, like, share and subscribe.